Today we will look into the chapter 2, a snake charmer's story of your EVS book Looking Around, class 5. Children, have you ever seen snakes? Do you know there are different types of snakes living on land, living in water, some non-poisonous and some poisonous. This is Nag Gumphan. Design of this kind are used in rangoli, embroidery and as wall decoration in Saurashtra, Gujarat and South India. Today we have a guest, a snake charmer with us. बच्चों, मेरा नाम आर्यनाथ है। मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो मुझे पूरा यकीन है आप में से कोई नहीं कर सकता। क्या आपको पता है वो क्या है? मैं बीन बजा सकता हूँ। आपको देखकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि मेरे बीन बजाने से कैसे सांप नाच उठते हैं। मैंने यह कला अपने परिवार के सदस्यों से सीखी है। हम जिस समुदाय से आते हैं उसे कलबेलिया या सपेरा कहते हैं। हम एक गांव से दूसरे गांव में सांपों को बांस की टोकरी में रखकर घूमते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। यहाँ तक कि खेल खत्म होने के बाद भी लोग खड़े रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे टीन के डब्बे में कई तरह की दवाइयाँ होती हैं जो हम जंगलों से इकट्ठा करते हैं। ये सब मैंने अपने दादाजी से सीखा है। इसके बदले में लोग हमें पैसा और अनाज देते हैं जिससे हमारा जीवन यापन होता है। Kalbelia is the name given to the community of snake charmers. Group of snake charmers are called Kalbelias. Do you know, children, of the many kinds of snakes found in our country? Only 4 types of snakes are poisonous. They are cobra, common krait, Russell's viper, and saw-scaled viper. Now children, think and tell the answer of these questions based on the topic you learn in this part of the chapter. Today we will look into the chapter 2, a snake charmer's story of your EVS book Looking Around, class 5. Children, in previous part we discussed about the relationship and interdependence between the snake charmers and snakes. प्यारे बच्चों, पिछले भाग में मैंने आपको बताया कि कैसे सांप हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। आपको पता है कि ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते, पर कुछ सांप इतने जहरीले होते हैं कि उनके काटने से ही लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि कैसे सांपों को नुकसान पहुंचाए बिना हम उनके जहरीले दांतों को तोड़ सकते हैं और कैसे उनके मुंह में जो जहर की थैली होती है उसे बंद कर देते हैं। Children, the front 2 teeth of snake are called fangs. Fangs are sharp, long, hollow teeth that are connected to a small sac in the snake's head behind its eyes.
These sacs produce a poisonous liquid called venom. When a snake bites, venom is released and enters into the victim's body. Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. Some people kill the animals and sell their skins at high price. So they made a law against this. In previous chapter you learned that these people are called as poachers or hunters. Snake charmers never kill snakes and sell their skins. Snakes are their treasure. Snake charmers make a different life for themselves with this law as they can't keep snakes with them. They now make a bean party to entertain people. Musical instruments used in bean party are bean, khumba, khanjari and dhol. Except dhol, all other three instruments are made from dried gourd or lauki. To entertain the people, they perform Kalbelia dance, which have movements similar to the dance of the snake. Traditional attire which gives them serpentine similar by virtue of their special dancing. So, the children, in this chapter we learn that we should not be scared of snakes, as all snakes are not poisonous. Snakes are friends of the farmer. Yes, snakes are friends of the farmer. They eat the rats in the field. Otherwise, rats would eat the crop. Do the survey on the people who keep animals and make a report on your project and read it out in the class.